Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to tell you a very important question that is basically asked by various candidates on my channel guys. That is, bhaiya, what is the difference between the CSC and IT? Okay, bhaiya, I am wanting to do the BTech in these branches, so please tell me the difference between this. Okay, these two branches guys. So in this video I will give you complete difference between these two branches. What are the syllabus, what are the scope, what is the salary, and various important things that I think that if you are the candidates, either the JEE Main, WBJEE, COMDEC, or whether basically if you want to take admission into these branches, then you should know the difference between these two guys. Okay. So before moving to the video guys, if you are new viewer to my channel, support my channel for getting such informative content. Okay. So let us come to the point guys. Okay. So difference between the CSC and IT. So friends, difference between the CSC and IT. So first of all, guys, let me tell you that CS engineering or IT engineering. CS is basically, you can say in abbreviate form of computer science engineering, IT information technology guys. Okay. So according to syllabus, if you want, then guys, almost 80% syllabus for both computer science engineering and for the IT students, almost both have the same syllabus. Okay. There is just little bit different, or you can say 20% difference between these two branches guys. Okay. और अगर बात करें तो प्लेसमेंट के बारे में, so whenever the company came, then almost in 90% case both basically every company consider both the branches as usual. Okay, means ये दोनों में आप समझ सकते हैं कि कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. Okay, but yet I am going to tell you some of the very important, okay, by point guys, that is what is the various difference between these two branches. So first guys, talking is that CSC, as I have already give you the full form, that is the CSC means computer science and engineering, and IT is that is the information technology. Now coming to the second category, that is what is the field of work. Okay, so basically computer science engineering, you can say computer is a profession of computer scientist. Okay, where they basically deal with the design and development of computer component, where they basically design various software, various framework and network things that is important for them. Okay, next guys, very important, that is the IT. Okay, so IT is the branch of engineering that deals with the application of computer in business. Okay, so basically you can say whatever the things that we learn on the computer science engineering, basically they are little bit advanced and they basically apply that onto that. Okay, means they applied that computer functionality into the business sector. Okay, these are our the two major difference. Okay, now talking to the various important thing, that is the career. So what is the career in the computer science engineering and for the IT student? So for the CSC students, कैरियर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ सिस्टम डिजाइनर, वेब डेवलपर. वेब डेवलपर जिनको नहीं पता है भाई, वेब डेवलपर एक्चुअली प्रोफेशन वेयर दे बेसिकली यूज टू डिजाइन द वेब पेजेज एंड वेरियस थिंग. ओके, जैसे कि आप अभी वेब पेज देखते थे, कोई भी वेबसाइट ओपन करते तो सब डिजाइनिंग वगैरह का काम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का होगा. और बात करें कि IT स्टूडेंट के लिए कैरियर कौन कौन सा है, तो वेरियस इंपॉर्टेंट कैरियर्स आर अवेलेबल सच एज द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस नेटवर्क. देन यू कैन क्लियरली विजुअलाइज दैट इज द network architecture, architects, database administrator, system administrator. Okay, so these are the various career opportunity in this. Almost आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू और प्लेसमेंट की बात करें या कंपनी की बात करें तो कोई खास लोग डिफरेंस इसमें मानते नहीं. ओके, सिलेबस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जस्ट 80% ऑलमोस्ट सेम है, 20% डिफरेंट. ओके, कोर्स सब्जेक्ट बात करें तो इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस, वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज द कंपाइलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपको अबाउट 5 to 6 सेमेस्टर में पढ़ना होता है. ओके, बात करें IT के लिए कोर्स सब्जेक्ट तो ई-कॉमर्स हो गया, ई बिजनेस, ई गवर्नमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग. आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट बहुत तो कुछ होता है, जैसे कंपाइलर डिजाइनिंग, तो कभी कभी कंपाइलर डिजाइन IT वाले कोई पढ़ना होता है कुछ यूनिवर्सिटी में. ओके, सो ऑलमोस्ट बोथ है वो सिमिलर का. ओके, देन एरिया ऑफ स्पेशलिटी जो कि अपना लास्ट पॉइंट है. ओके, सो एरिया ऑफ स्पेशलिटी फॉर द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दैट इज द कंप्यूटेशनल साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विजन, एम्बेडेड सिस्टम. ओके, ये सब में उनका स्पेशलिटी रहता है. ओके, but in context to the IT, so they have basically project management, computer networking, enterprise resource planning. Okay, so ये सब little bit difference है between the computer science engineering and IT student guys. Okay, so these are the short information related to this. I hope your doubt is clear. Again बताता हूँ guys, if you are planning to take admission to any college in these branches, then you should consider both as a basically you can say as a equal things. Okay, but अगर प्रायोरिटी देने का बात करें तो आप कंप्यूटर साइंस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे दे और IT को सेकंड प्रायोरिटी पे दे. क्यों गाइस, बिकॉज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कुछ कंपनी होता है जो कि बस CSC वाले को करते हैं, जो कि बहुत कम ही रहता है. ओके, जो कि बेसिकली कह सकते हैं हाई जो कंपनी आता है गूगल, ये सब थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं CSC IT, बट एक जनरल कंपनी हुआ. ओके,
General software company were such as the TCS, Wipro, Cognizant, okay, so they are the average company, they basically consider almost both them are equal, okay, यहाँ तक अमेजन वगैरह भी हम लोग को दोनों को सेम ही करता है, ओके, सो अगर प्रेफरेंस देते हैं आप CSE को ऊपर रखें क्योंकि ये ओल्ड ब्रांच है, ओके, IT थोड़ा उससे बाद ही बना, so these are the difference between the CSE and IT. I hope your all doubt regarding these two branches clear. If you have any doubt related to any points, feel free to ask here, and you can comment also here that on which टॉपिक और ऑन विच ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग यू वांट वीडियो, ओके, अदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आप किसके बात चाहते हैं, किसके कौन सा ब्रांच के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं, यू कैन कमेंट हियर, ओके. इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड, ओके, एंड फॉर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सपोर्ट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. टिल देन बाय बाय, मीट इन नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद.